everyone, I'm Mansi and once again welcome back to our series of videos. इसके पहले वाले जो 2 वीडियोस थे उसमें हम लोग ने एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए शुरुआत की थी एंड दैट इज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस व्हिच a guest room attendant needs to be followed when they are working into their particular section in guest rooms. इसके पहले हम लोग ने बात की थी about occupied room, about vacant room, about departure room, about VIP setups. Today we are going to continue with the same topic and today we are going to talk about the processes which needs to be followed in out of order rooms, in the second service and in the turn down service. So let's get started with our first process and that is about the under repair rooms or out of order rooms. ये ऐसे rooms होते हैं जिसमें maintenance department ये आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम मेंटेनेंस के लिए लेते हैं या फिर उसमें कुछ हेवी मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो हाउसकीपिंग पुट दीज काइंड्स ऑफ रूम इनटू आउट ऑफ ऑर्डर. जब भी रूम आउट ऑफ ऑर्डर लिया जाता है तब वो रूम सिस्टम पे OOO या फिर अंडर रिपेयर है तो U/R ऐसे डिनोमिनेशन से नोट किया जाता है एंड दैट रूम इज नॉट बीन सोल्ड टू एनी ऑफ द गेस्ट्स who wants to check them. So while preparing a room for under repair or out of order, it's also very important. इसमें भी कुछ processes है, कुछ चीज़ें हैं जो guest room attendant को follow करनी होती है. Like all the bed linen, all the bathroom linen should be removed from the room and should be taken into the pantries or shoot into the linen chute. वो जो बेड है, मैट्रेस है, हेडबोर्ड है, उनको डस्ट शीट से कवर करना है. जो भी मूवेबल चीज़ें हैं रूम में उनको वो रूम से निकाल के अपने स्टोर में रखना है या फिर पैंट्री में रखना है विद प्रॉपर लेबल. उसके बाद जो बाथरूम में जो सप्लाईज होते हैं या फिर रूम में जो सप्लाईज है उनको निकाल के उनको भी अच्छे से पैक करके हमारी प्रॉपर पैंट्री में विथ लेबल रख देना है. द टेलीफोन कनेक्शन नीड्स टू बी रिमूव्ड. इसको भी एक पॉलिथीन में रैप करके उसी रूम के क्लोजेट में हमें रख देना है. मिनी बार हैज़ टू बी एम्प्टीड. देन द टेलीविजन सेट, द रेडियो कनेक्शन नीड्स टू बी रिमूव्ड. बाकी रूम में जो सारी चीज़ें हैं, जो वाटर सोर्सेस है स्पेशली इन द बाथरूम, वो सबको सील करना है. सिर्फ एक वाटर सोर्स ओपन रखना है. सो इन नीड ऑफ वाटर, इफ समवन नीड्स द वाटर दे कैन यूज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सोर्स. देन जो भी सॉफ्ट फर्निशिंग है जिनको लॉन्ड्रिंग की ज़रूरत है उनको लॉन्ड्री में भेज देना है विथ प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ द लॉन्ड्री. कारपेट अगर रूम में है तो उसको निकाल के कारपेट शैम्पूइंग के लिए भेज देना है. जहाँ पे भी जो रूम अंडर रिपेयर या फिर आउट ऑफ ऑर्डर लिया है दैट हैज़ टू बी नोटेड इवन इन द शीट विच इज़ बीन प्रोवाइडेड to the guest room attendant. Even the supervisor has to be known about that room. उन्हें frequently वो रूम में visit भी करना है to check कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना वो रूम में, कुछ misuse तो नहीं हो रहा है. So it is very important. Even रूम में अगर कहीं पे फ्लावर अरेंजमेंट है या फिर इंडोर प्लांट है उसको निकाल के उनको हॉर्टिकल्चरिस्ट के पास भेज देना है. Then is about the what we say as the accessories which are moved from one room to another, maybe in the stores, even anywhere. उसका भी नोट डाउन गेस्ट रूम अटेंडेंट को इन उस चीज़ के डिटेल्स भी नोट डाउन करके रखने हैं. दे इवन हैव टू इन्फॉर्म देयर सुपरवाइजर्स. अगर होटल में, प्रॉपर्टी में आउट ऑफ ऑर्डर का टैग अवेलेबल है, डोर नॉब अवेलेबल है, सो दैट हैज़ टू बी डिस्प्लेड आउटसाइड द रूम. द रूम शुड नॉट केप्ट ओपन. वो बंद होना चाहिए ताकि कोई गलती से उस रूम में ना जाए. मे बी अ गेस्ट, मे बी अ चाइल्ड, anyone, so it may leads to an accident. So out of order का टैग हमेशा वो रूम के बाहर होना चाहिए if that is available into the property.
Next process which we are going to talk about, and that is a very interesting thing, and that is about a turn down process, evening सर्विस, टर्न डाउन सर्विस. इस प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. सो व्हाट इज टर्न डाउन सर्विस? टर्न डाउन सर्विस एक ऐसा सर्विस है जो होटल में प्रोवाइड किया जाता है फॉर द गेस्ट कंफर्ट व्हेन द गेस्ट कम्स बैक टू द रूम इनटू द इवनिंग. सो द रूम हैज बीन मेड रेडी फॉर द कंफर्टेबल स्लीप ऑफ द गेस्ट. इसमें क्या क्या चीज़ें होती है? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज लाइक पिलोज को स्लांटिंग किया जाता है, जो स्ट्रेट रखे हुए होते हैं उनको स्लांट किया जाता है. इन दिस आई विल नॉट गो एज पर द बुक थिंग. आई विल शेयर माई ओन एक्सपीरियंस और आर ओन रूटीन विच वी यूज टू फॉलोड व्हेन वी वर वर्किंग एज अ गेस्ट रूम अटेंडेंट. हम लोग ये सारी चीज़ें करते थे. फर्स्ट थिंग वॉज द पिलोज नीड्स टू बी डाउन. रनर कुशंस जो भी है उनको प्रॉपरली फोल्ड करके कबर्ड में या फिर उसके डेजिग्नेटेड प्लेस पे रखा जाता है. टर्न डाउन फोल्ड दिया जाता है, दैट इज एन ट्रायंगल फोल्ड विच इज गिवन ऑन द साइड वेयर द गेस्ट इज प्रेफर टू स्लीप. उसके बाजू का जो नाइट लैम्प है वो ऑन किया जाता है. उसके ऊपर, वो फोल्ड के ऊपर या फिर पिलो के ऊपर ब्रेकफास्ट नॉक कार्ड रख दिया जाता है. सो इट विल बी ईजियर कि उसके ऊपर गेस्ट को जो भी ब्रेकफास्ट चाहिए है उसको टिक करके दे कैन हैंग इट आउटसाइड देयर रूम. सो जब भी अर्ली इन द मॉर्निंग रूम सर्विस के लोग हर फ्लोर का जब राउंड लेते हैं, दे कैन पिक अप दोज कार्ड्स एंड दे कैन प्रोवाइड with the breakfast to the guest whatever the guest is needed. Then जो भी blinds है या फिर curtains है उनको drawn किया जाता है. So it will be like cozy and comfortable atmosphere in the room. Then is about the general cleaning thing. If the guest has used the room, especially the washroom has been used, they have to clean the washroom. If not, they can leave it as it is. If the glasses are used, they have to again wash them, clean them and keep them aside. As I said, washroom में अगर WC used है तो उसको clean करना है, उसको वापस sanitize का tape लगा के it should be ready for the next use of the guest. If some bath linen is been used by the guest, that has to be removed and replaced with the new one. Then if any special things a guest is been provided by the property, like where I used to work in the night, for the turn down service in the property, they used to give the chocolate milk to some guests. They used to place a chocolate platter in some rooms. So it depends upon property to property. उनके SOP के हिसाब से ये चीज़ें होती है. So that also needs to be coordinated with the room service department or the butler department, whichever department is taking care of all those things. That is also need to be coordinated so that there will be minimal entries in the room. And most importantly, entering in the room should be followed as per the procedure, and while coming out of the room, please you have to check, you have to be sure कि आपने वो दरवाज़ा रूम का वो proper lock किया हुआ है. It is very important as the privacy of the guest is concerned. Locking the door after giving the service, it is very important that you lock the door properly. I'll surely provide the image of triangle fold in the video itself. Then the next service or next process which we are going to talk about is the second service. किसी किसी होटल में ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कहीं पे ये चार्जेबल बेसिस पे होता है. सेकंड सर्विस इज द एक्स्ट्रा सर्विस. एक बार मॉर्निंग सर्विस होने के बाद और टर्न डाउन सर्विस होने से पहले या फिर उसके भी बाद, एक बार कोई भी सर्विस होने के बाद वापस गेस्ट सर्विस के लिए पूछता है, क्लीनिंग ऑफ द रूम के लिए पूछता है. सो दैट इज बिन कॉल्ड एज अ सेकेंड सर्विस. इवन इफ अ गेस्ट रूम अटेंडेंट इज प्रोवाइडिंग अ सेकेंड सर्विस टू द रूम, दे हैव टू राइट इट इन देयर शीट as well. Sometimes it is chargeable, sometimes it is not. As I said, it also depends upon the SOP of that particular property. इसमें क्या होता है? सेकेंड सर्विस इज सेम एज द मॉर्निंग सर्विस. अगर
रूम में पार्टी हुआ है या फिर किसी गेस्ट रूम में मीटिंग हुआ है गेस्ट का, सो गेस्ट में आस्क फॉर दीज सर्विसेज। सो ऐसे टाइम पे जो भी गेस्ट के खाने के या फिर कुछ ट्रेस है, फूड ट्रेस है, क्लियरेंस है, उसको क्लियर करना है। जो भी एमिनिटीज़ यूज़ किए गए हैं उनको रिप्लेनिश करना है। इफ़ द बाथरूम इज़ बिन यूज्ड दैट हैज़ टू बी क्लीन। इफ़ द बेड इज़ यूज्ड इवन द बेड नीड्स टू बी मेड, बट बेड ज़्यादा यूज़ नहीं होता। मे बी दिस सर्विस गेस्ट आस्क इफ देर इज़ अ मीटिंग और समथिंग इन द रूम विच हैज़ हैपन एंड देन दे जस्ट वांटेड टू डू अ क्विक रिफ्रेशमेंट ऑफ द रूम। द एयर फ्रेशनर नीड्स टू बी स्प्रेड बिकॉज वो जो फूड का स्मेल है या फिर वो रूम में रह सकता है। सो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स विच एवर एरिया इन द रूम इज बिन यूज दैट नीड्स टू बी टाइडन अप प्रॉपरली अगेन एंड then the guest room attendant can go out of the room. If the bathroom is used, that needs to be serviced properly with all the used bathroom linen needs to be taken out and replace them with the new fresh one. Empty all the trash bins, empty all the ashtrays which are there. Then is about replacing waters, then washing up the glasses which are there in the minibar. Those need to be washed and that has to be done. So these are very small things which seek attention is required. These things can be done in the second service if it's been asked by the guest. So it depends upon how the situation of the room is. इसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है. It is about servicing the room again. So these are the processes which we were going to talk about today. Now ending up to this topic, and that is about closing after cleaning. It is very important that each and every shift which works, that shift will take proper care of all the equipments and of all the areas where they have worked and the equipments they have used. It is very important कि next shift को जब handover जाता है, it should be very proper, so it will be easier for them to work in that particular shift. Like for the cleaning agents, अगर आपने कहीं पे cleaning agent use किए हैं, so वो cleaning agent को अगर वो ख़त्म हो गए हैं तो वो बॉटल्स को, वो स्प्रे बॉटल्स को वापस से रिफ़िल करके प्रॉपर लेबल के साथ हम लोग उनके कैडी में रखें. उनके जो नोजल्स है वो प्रॉपर बंद करके रखें. अगर लिनन कुछ कहीं से निकाला गया है किसी रूम से, सो वो लिनन शूट कर देना है प्रॉपरली. देन अबाउट द रूम अटेंडेंस कार्ड, अगर आपने वो यूज़ किया है तो दैट हैज़ टू बी स्टैक्ड प्रॉपरली. अगर पैंट्री में आपने कुछ लिनन यूज़ किया है तो उसको बराबर से रख देना है. इवन इन द इवनिंग, इफ़ यू आर डूइंग इवनिंग शिफ्ट, इवनिंग में लॉन्ड्री से फ्रेश लिनन आता है. सो इन सम होटल्स इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो इवनिंग शिफ्ट वाले लोग हैं वो लिनन को भी वापस लिनन रैक में स्टोर करके रखें. देन अबाउट the winger trolleys, if you have used the winger trolleys and everything, that needs to be emptied, that needs to be kept well. Then about the pantries, the floor of the pantry needs to be mopped before you end your shift. अगर कहीं पे कुछ spill हुआ है, कुछ गिर गया है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत important है. Before you come down, make sure the floor pantry is been properly locked, ताकि अगले वाले शिफ्ट में वो जब आए तो दे विल गेट अ प्रॉपर सेट किया हुआ पैंट्री. कोई पैंट्री में आके मिसयूज ना करे. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. देन इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट अगेन अबाउट द कीज़. जब भी हर शिफ्ट चालू होती है एंड एंड होती है, कीज़ का टेक ओवर एंड हैंड ओवर होता है. मॉर्निंग में कीज़ दी जाती है, वापस वो शिफ्ट ख़त्म होने पे ली जाती है. आफ्टरनून शिफ्ट को वो कीज़ दी जाती है. व्हेन दे लीव द कीज़ आर अगेन टेकन बैक. सो कीज़ नीड्स टू बी ब्रॉट डाउन विद द प्रॉपर लॉक शीट विच इज़ बिन फिल्ड बाय यू. सो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपने उस शिफ्ट के लिए किया है, दैट हैज़ टू बी टेकन डाउन when you are coming down. One more addition, a small addition which I wanted to do is like it's about the turn down service or the evening service. अगर आप गेस्ट रूम
में जो एंटर करने की प्रोसीजर है वो करने के बाद आप अंदर जाते हो. इफ़ यू डू नॉट फाइंड द गेस्ट इनसाइड, यू डू द टर्न डाउन सर्विस एंड देन you come out of the room. If you find the guest inside, then that time we have to ask the guest that, sir, ma'am, would you like us to give or provide the turn down service to your room? If they say yes, then you may go ahead. If they say no, then you have to write that down as well, that the guest has refused for the service. And if guest tells you that come after 10 minutes, come after 15 minutes, you have to again go back and have the courtesy to go back again and do the turn down service or do the evening service for the room. So it is very important. We should not leave any room which has been occupied, or where the guest tells you that to come after some time. You should not leave any such rooms without attending. It is very important. So that's it for this topic. In tomorrow's video we will meet up with a new topic, and that will be about the cleaning processes of public area, which is very important, very important, because before seeing a room, the guest first impression goes from the public area. So it is very important that the public area needs to be spick and span and clean. So we will meet into the next video with the new topic about the processes which needs to be followed in a public area. Till then, do like to our videos, do share it with your friends, and don't forget to subscribe our channel. Thank you.